ठीक है, आई थिंक आप लाइव हैं। मैं पाकिस्तानी करके मैं लिंक शेयर कर देता हूँ फिर। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ शेयर वो मुझे आता नहीं, मगर आप ऑप्शन वो क्लोज रखें, अपना ओपन रखें, हो सके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ शेयर करूंगा, हाँ समझ आ गई, ठीक है ठीक है।
We should start. Today, our session will cover the tax laws, especially in Pakistan. So, first of all, we should understand what are the laws that work in Pakistan. Under the umbrella of these laws, tax is charged, and tax is levied, and tax is assessed, tax is collected and recovered. Before going towards these laws, for sake of basic understanding, I want to make you understand. Basically, tax laws stands entirely different from the rest of laws in country or across the world, because we have three approaches to for understanding this fiscal law, especially uh, because in the tax matters and in taxations, first we understand tax management, that is under the umbrella of the law is done. Like we have section 9 and section 10 of the income tax ordinance that tells us how the tax is assessed and how the tax is computed. Later on, we file our annual returns if we are dealing with income tax. And after that, if we deal with the sales tax activity, we will file monthly returns. So the once we start doing that, so that is what first of all we comply. So there are certain compliance. So legally, in tax matters, there is area. First one that is you have to comply with certain legal moralities. Secondly, once you file your returns, then relevant department prove your submitted, and whether forcefully or voluntarily you have submitted your annual and monthly returns. So when the department come to understanding the returns filed by the person who deals in the sale tax and the income tax, that's not as per law, and that's not as per demand. So, for sake of understanding this, that's the basic concept. Okay, first of all, we file our tax returns, whether they are annual or the monthly. And secondly, when we once we file, the department approve them, and then we call assessment. After the assessment, then the proceeding starts. So we file appeal against that assessment order, appeal one, and we file appeal second against if the decision against us by commission of appeal, then we go to the second appeal in tribunal, and after that we have the tax reference, and later on we have appeal in Supreme Court. So that is a very cursory approach to understanding law. Means there are two tiers. First thing that we you file your returns monthly or the annually. If you're dealing with income tax, that you are required to file your annual returns, and if you are dealing with the sale tax, then you have required to file your monthly returns. Then afterwards, the department take action by proving your filed income tax or sale tax returns, and then law comes in the field. And now coming back to the broader spectrum of laws in Pakistan, basically we have as at the moment we have 6 to 7 laws in Pakistan that majorly involve in collection and assessment and the recovery of the tax. First of all, we have the income tax ordinance. Income tax ordinance, and that before that there was 1979 income tax ordinance.
and that was repealed with the 2001 income tax ordinance, read with the income tax rules 2002. That deal, this law deals with your income, what you earn, the basic understanding of income tax law, not sell tax. The income tax law is what you earn annually. Income tax applies on that your income. The second major law is your Sell Tax Act 1990. So, read with rules, Sell Tax Rules 2007. Now, the operation and application of this law is totally different. First thing, already explained, we have to pattern to file our returns. One is annual, another is monthly. Sell tax act deals with the taxable supplies. Now, income tax is a taxable income, and sell tax is a taxable supply. Means you are involved in manufacturing, and you are involved in production, you involved in sale, you involved in purchase, and you involved in distribution. So these major activities can come under the umbrella of the sale tax act. Now, the how cell tax is charged, that we will discuss later on. But first of all, I'm telling you what are the laws in Pakistan under which the tax is collected and tax is charged. So, second is Cell Tax Act, right, with the Cell Tax Rules 2007. Now, afterwards, we have a major law. These are federal laws. I'm first telling you. There are, afterwards, I will explaining the provincial laws that came into field in the wake of the 18th Amendment. So afterwards, we had the Federal Excise Duty Act. Federal Excise Duty. Now there is a bit confusion. This law is not well known to the general public. So now the word is used duty, federal excise duty. Before that was sell tax, and before that was income tax. Now itself you can understand the wisdom lies in the title of the law. Now we have the sell tax act and income tax, but now in this law there is no word of the tax. It's a duty. So duty is a form of the tax, but this is not purely as a tax. It's a collection, is a different, and that is not applicable to everyone. See? Now, the income tax is more general, and you can say sell tax is specific, but federal excise duty is a more specific. That's very limited. That does not apply to each and every person in each and every activity. There are certain classes and the powers the government control and excise whenever government feel okay, in these industries and these sectors the government wants to collect tax and duty from them, then come under the umbrella of the federal excise duty. So that's a bit different thing, but assessment is same. You can say your returns comes under same umbrella, but there are certain thresholds. So now coming back to provincial laws. Now, as so far we have discussed majorly Income Tax Act 2001, right, with the rules to Income Tax Rules 2002, and second is Sale Tax Act 1990, right, with the Sale Tax Rules 2007, and there are some special procedure Sale Tax Rules, withholding agent like that, and third is Federal Excise Duty. Now, after the 18th Amendment, the concept of cell tax on services came into field. Before the 18th Amendment, the cell tax on services, even though was charged under the Cell Tax Act of 1990.
So, the purpose of explaining here is there are four laws in Pakistan, cell tax and services, Punjab cell tax and services, Sindh cell tax and services, KPK cell tax and services, and Balochistan cell tax and services. And they respectively, each province has established its own separate board like BRA, Balochistan Revenue Board, you have PRA, Punjab Revenue Authority, you have the SRB Sindh Revenue Board, and similarly with the KPK. So after the 18th Amendment, there were changes made to second schedule entry 47, 48, and 9 that deal with the collection of the tax. The legislative competence means where provinces will collect the tax and where the federation will be collecting the tax. So that is umbrella in Pakistan. So under these laws, under different sectors and under different mechanism, the tax is collected and tax is levied and assessed, charged, and recovered. Now coming back to a bit introduction of the each law separately. So I want to first touch the income tax ordinance. Coming back to the income tax ordinance. So as previously I explain income tax deals with your income, but there is a confusion. Most of people think that whether a tax applies on me or not. So this question answer lies in income tax law, not with me, not with anyone else. The question lies with this act ordinance. So before moving ahead, we must understand what is income and what is a taxable income. So there is a chapter titled "Tax on Taxable Income." So title is given computation of taxable income. But what I earn, that's not taxable income. That's my income. So how the computation is carried out? So what I earn, suppose I'm an employee, my salary is at 10,000 per month. Now the whole year, my salary is 120. So now here question is that whether tax uh, is charged against my salary or not. So this question answer lies here in section 9 and the 10. Before touching to section 9, I want to make you read, I want to make you understand the section 10. You can say the basic understanding. First, understand that in total income, the total income of a person for a tax year shall be sum of. Now there are different words. Total income of person. The definition of person is very important. That is given in this law. That will be explaining. We will be explaining it further. Okay. And second expression use the tax year. Tax year itself a different discussion we have in this law that is defined. What is the tax year? Shall be the sum of is what is included in your total income. In your income, what is included, that is the personal income under all heads of income for the year. Now what does it mean? Suppose I'm a teacher, I earn I get salary from the university, but I have also shop in my hometown. Okay. And I do teach in university. I have a salary from there. Secondly, I run a shop in my hometown. But also, in the evening time, I also provide lectures. Now, or I run an academy. So, running an academy, you have employees under your umbrella. In the morning, you are yourself employee, but in the evening, you are employer. Now you are running a business. In the evening, in the morning, you are having salary, and sorry, in the morning you are having salary, and in the evening you are running a business. Now the two heads, but same
time, you have four flats in G10, Islamabad, and DHA Karachi and DHA Lahore, two to three flats and Bangalore, whatever you call. Monthly, you also have income from that uh, Bangalore's, your rent. So you are having income from rent as well. But in this year, suppose that for the year which we are likely to declare our returns, I have sold my two bungalows, 3 acre land, and two cars, and kind of machinery that you have using in your business, whatever you call it, or you have sold your home tuition center. Now that you purchase a plot, the price of that plot was at 100 rupees, suppose last year, okay, or the 2 years back. But this year you sold that plot having price 200 rupees. Now the day you purchase a plot, that day the price of this plot was 100 rupees, but after 2 years you are selling that plot. Now the price of this plot is 200 rupees. It means you have earned a 100 more. Now your 100 is your income. 200 is not your income. 100 is your income. So because that is a capital gain. That is capital gain. What I want to make you understand, what's the total income? In the morning, I earn salary. In the evening, I run a shop and I run a tuition center, both are the business. And I'm having rent from my different properties across the country. That's income from the property. But I also sold two plots in Bangalore, whatever you call in this year, that is income from capital gain. But now maybe other sources we have, that suppose in there are my shares in a company. Also income is coming from that shares. So that is falls in other source. So I shall club these all income I've been having from different heads, from salary, from shop, from business, from property, from anywhere. That is my source of income. Understand? So I explain these things like that. 1 minute, please. So these are heads. Salary, income from property. I have given example of my different properties in country. These are given on the rent. So income in form of rent comes from these properties. Income from business. I'm running my home tuition center. I run a shop in my village in hometown. And capital gain, I explained, means I bought two bungalows 2 years back, but this year I sold two bungalows having 100 plus gain from that property, capital I invested. And third is income from other source. Income from other source means as I given example of dividend or remittance, whatever you call it. Okay, so that is was my total income, but that is not taxable. That's not taxable. But what is the taxable? Uh, Up to that, is there any question? Everybody has understand what is that's total income, and how do we deal when we calculate our income. So but now the b of the 10, person's income exempt from tax under any of the provision of this ordinance. This is very important. Now this subsection of the 10b says there are certain, suppose I run a NGO, clear? I run a charity institution. But that the income, the amount, the transaction, whatever I do deal, the income or the amount that I receive from any person, from any university, or sorry, from any government sector, from other countries, but that is not taxable.
But you have to declare here that, because that is your total income. That is your total income. So amount or business or an activity that you are dealing with, and legally that is exempted, but that is a part of your total income. So there are two things: your all heads of income and a kind of income that is exempted, but even though that's part of your total income. Clear? So now the total income is not a taxable. What is the taxable? On your total income, tax does not apply, but on what tax applies? So coming back to the section 9, coming back to the section 9, that the taxable income of a person for tax year shall be the total income under class A of section 10, as we have discussed, just of the person for the year reduced but not below zero by the total of any deductible allowances. Now there are certain deductions allowed in business, especially, and especially income from property, even though, and income from capital gain. So what I earn, definitely from business, what I earn, I give the tuition center that I run. I have teachers; they are my employee, and the I run shop. They are my employee. I do give them salaries, and I do give their rent. I do give the electricity bills, and I have the two to three vehicles. The I do also fill oil or gas, whatever you call. I have maintenance charges. Now everything that is expense. Now that is legally deduction is allowed. Suppose I earn 10,000 per year. Now the my earning means my total income is 10,000. But law says, tax law says, what you have utilized as expenses, you can deduct from your main your total amount. Suppose I earn 1,000 in a year from a business, I will minus and I will deduct my expenses. Suppose 600 rupees or 10 and 500, my amount is a 1,000 earning. 500 rupees, 600 rupees, or 400, I will minus from the total amount. Now, when I will minus legally my expenses, the remaining amount is taxable. So, I want to read again as taxable income. This is very important. In the country, these days, there is a discussion about the super tax. Clear? The super tax has become a separate kind of a treatment with the people income. Now there are certain deficiencies in this law. When we calculate, assess super tax, the kind of threshold is given. But problem is that under what parameter we will calculate and assess the your super tax. There are certain income that are exempted, certain incomes under which expense is not allowed, certain income where your expense is allowed. So when we apply this formula in computation, so the super text will be confused, and it is. So now the concept is clear: what's your total income and what is your taxable income, and where from you earn. These are income of heads. Suppose income from salary, tax applies. Income from business, tax applies, subject to the expenses deducted, and your income from the property in form of the rent, income from the capital gain, what you purchased last year or 2 years back, 3 years back. Now you sold and you plus minus make, and after that, what amount you will declare. So capital gain, and last is your income from the other sources. So that is basic concept. Now, before moving ahead, now come back to the a bit practical
dimension of this law. But now you have made everything is ready. I earned this and this is expense. Now I want to declare. So if you are registered under section double 1 4, you have NTN and you are supposed to mandatorily you have to declare your annual income. Now the two condition in double 1 4, you are legally bound to declare. If you don't declare, they will issue you a notice. 114 का नोटिस आ जाएगा कि आप अपनी इनकम टैक्स जो है वो डिक्लेयर करें. Okay, and I will be explaining. Shah, I don't know your name, but your question is that, sir, then why many things are subject to final tax? No, the final tax, you can say this is a different FTR. So if you understand FTR, then you have to understand the NTR and PTR. Although this is the problem when we come to the assessment of the super tax, we ask question to ourselves. I have income from different regimes. मेरे पास जो इनकम है वो एफटीआर से भी गुजर के आई है, वो आपके एनटीआर से भी गुजर के आई है, वो आपकी मिनिमम जो एमटीआर है टैक्स से भी गुजर के आई है 113 से. अब ये सारी जब गुजर के आ गई है, अब क्या ये गुजरने के बाद जो है उस पर सुपर टैक्स लगेगा या नहीं? सर थ्रेशोल्ड आई एम नॉट गेटिंग यू. व्हाट यू वांट टू आस्क? थ्रेशोल्ड ऑफ द व्हाट? You are asking threshold like your salary head or income head, income from business or super tax. गालबन 150 मिलियन है सुपर टैक्स का. फिर सुपर टैक्स की भी सेक्शन 4B है और आपका सेक्शन 4C है. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स टू बी डिस्कस लेटर. अब आपने रजिस्ट्रेशन कर ली और आपने अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए और टैक्स रिटर्न के साथ जो है आप 166 की वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करते हैं. अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट पीपल आस्क अस, if I declare this and that and that and that's taxable or not. Keep in one thing in mind. What is in what holds in your income, that is taxable. And when you put something in transaction, so tax is a kind of behavior. Tax does not always in field, it comes in field. You bring that in field. मैं बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है, चुप करके बैठा हूं, टैक्स नहीं लगेगा. मैं जब कुछ करूंगा टैक्स लगेगा. समझ रहे मेरी बात? सो आपकी जो बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी है, आपके जो पैसे पड़े हैं, वो उन पे तो टैक्स नहीं लगेगा. जब मूवमेंट होगी, प्रॉपर्टी सेल करेंगे, परचेज करेंगे, कोई गेन आएगा, कोई मूवमेंट होगी, तो उस पर टैक्स लगेगा. सो वेल्थ स्टेटमेंट का मकसद ये है कि आपके पास जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है आप अपनी डिक्लेयर करें. ठीक है, डिक्लेयर करें. और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मैं समझता हूं कि जब आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस पर्सन फॉर होम यू आर डीलिंग हिज इनकम. कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं मैं, उससे एक एक चीज़ पूछें. आपके पास क्या है? आपके पास कोई बाइक है, आपके पास कोई गोल्ड पड़ा है, आपके पास कोई सिल्वर है, आपके पास कोई ज़मीन है, कोई बेंगलो है, जो कुछ भी आपके पास है. इवन आपको उसके लैपटॉप, उसके फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और उसके वॉचेस, ब्रेसलेट, जो कुछ भी उसके पास है. ठीक है, लोगों के पास तो सिल्वर और गोल्ड की ब्रिक्स भी होती हैं. So you must declare each and everything, keeping tax laws in view. तो आप ना तो ये चीज़ें डिक्लेयर कर देंगे. जब ये डिक्लेयर हो जाएंगी, उसके बाद फिर कानून जो है ना वो इन फील्ड आ जाएगा. जब ऑफिसर आपके
फाइल्ड रिटर्न को प्रूव करेगा। जब आपने 114 और 116 के अंदर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, तो विद इन नो टाइम 10-15-20 मिनट के अंदर यू विल हैव अ काइंड ऑफ ऑर्डर, जिसको हम डीम्ड असेसमेंट कहते हैं। 120 का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा और आपके पास रिटर्न फाइल हो गया आपकी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, लोग 120 को 121 को और 122 को बड़ा मिक्स कर लेते हैं। 121 120 पे नहीं लगता। मतलब एक चीज आपने फाइल कर दी, उसके ऊपर जो है आप अब 121 अप्लाई नहीं होगा, वो 122 होगा। अब सवाल ये है कि 122 का जो सेक्शन है असेसमेंट का, ये कैसे अप्लाई होगा? एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सेक्शन 111 पढ़ना पड़ता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ 166 समझनी पड़ती है। इसको समझने के लिए हमें 177 214C एंड 24D भी समझना पड़ता है, और विद होल्डिंग का जो पैराडाइम है वो भी हमें समझना पड़ता है। ठीक है, ये रूट्स हैं जो 122 की तरफ आपको लेके आते हैं। जो 121 का रूट है वो तब है कि जब आपने रिटर्न फाइल नहीं की और आपको 114 के अंदर नोटिस आता है, और फिर भी नहीं की तो फिर वो अपने बेस्ट असेसमेंट के पास पे ऑर्डर पे कर देगा। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you have withholding paradigm in income tax law. अब withhold paradigm कैसे होता है कि जब मैं किसी बंदे से अपनी सैलरी लेता हूँ, तो वो उस सैलरी के ऊपर मुझसे टैक्स जो है ना कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को जमा कराता है। इसी तरह मैं कोई सर्विसेज देता हूँ, वो सर्विसेज भी जो हैं, उस सर्विस की जब अमाउंट मुझे मिलती है, तो उसकी अमाउंट के ऊपर भी गवर्नमेंट का इदारा है या प्राइवेट सेक्टर है या कोई मिनिस्ट्री है, कोई कोई भी वॉट एवर है, वो अमाउंट देने से पहले अपना टैक्स विद होल्ड कर लेती है। सो 149, 150, 151, 152, 3 से लेके 165 और 236C, E, D, ये सारा जो है ये विद होल्ड को डील करता है। मतलब जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन हो रही होती है वो बेसिकली विद होल्ड हो रहा होता है। अब जो विद होल्डिंग एजेंट है उसके ऊपर 166 लगता 161 लगता है अगर वो जमा नहीं करवाता। सपोज उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद जो है he is not paying that amount to the government, the government will issue that notice to him under the 161. Give me just 20 minutes, Imran Amir. Okay, so the thing is that कि द विद होल्डिंग पैराडाइम एक अलग पूरा आप समझ लें कॉरिडोर है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। सो वो मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरह डील करता है। उसकी लिटिगेशन किस तरह होती है जब 161 का उससे पहले 444 रूल इनकम टैक्स रूल 2002, उसके तहत आपको एक नोटिस किया जाता है। जब उसकी कंप्लेंस नहीं करते आपको 161 का नोटिस आता है, तो 164 का फिर एट द एंड पे ऑर्डर हो जाता है, 164 सॉरी। उसके बाद फिर रिकवरी जब जो मैकेनिज्म है असेसमेंट ऑर्डर के बाद, और ये चीज़ें आपकी रिकवरी की तरफ जाती हैं 137, 8 एंड 40 की तरफ। अब जब असेसमेंट हो जाती है, वंस असेसमेंट इज डन अंडर 122 और 121, तो फिर हमारे पास क्या रास्ता होता है अगर फैसला हमारे खिलाफ आ जाए और साथ साथ जो डिपार्टमेंट है वो 137 के नोटिस इशू कर देता है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं लॉ के अंदर 122 का जो ऑर्डर है उसकी रेमेडी क्या क्या है। तो मैं 127 के अंदर मुझे ऑप्शन है कि मैं अपील फाइल करूंगा कमिश्नर अपील के पास। मैं डिप्टी कमिश्नर का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करना है मैंने। ठीक है, ये नेक्स्ट रेमेडी है। इसी तरह फिर ये अपील 1 है,
अपील 131(2) है और 133 का टैक्स रेफरेंस है, और फिर इस तरह आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब ये इसका एक आप ये कहेंगे सिंपल इंट्रोडक्शन था इनकम टैक्स लॉ का। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, जो इनकम टैक्स लॉज हैं उससे पहले आप अर्न करते हैं। अब आपकी जब इनकम आपके सामने होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरी इनकम के ऊपर टैक्स कितना लगेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं इसको एक रिकेप दे रहा हूँ। आपके पैसे आपके पास आ गए डिफरेंट सोर्सेज से। अब अलग अलग जो हेड्स ऑफ इनकम है उसके अलग अलग रेट्स दिए होते हैं। जिस तरह आपके इनकम टैक्स में गालबन 14 से 15 स्केड्यूल हैं, हर स्केड्यूल डील करता है डिफरेंटली, बैंकिंग सेक्टर को अलग, इंश्योरेंस कंपनीज को अलग, आपके इंडस्ट्री को अलग, आपके एनजीओज को अलग, ठीक है, आपके शिपिंग शिपिंग जो के मेटर्स हैं उसको इनकम वहाँ से आती है उसको अलग, आपके बिजनेस को अलग, आपकी जो कैपिटल गेन है उसकी ट्रीटमेंट अलग है, कितने पैसों पे कितना टैक्स लगेगा, वो स्केड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनकी नेचर है, कुछ जो हैं वो क्लैरिफैक्टरी इन नेचर है, मतलब डिफाइन करते हैं व्हाट इज दिस। ठीक है, कुछ हैं चार्जेबिलिटी की सेक्शंस, चार्जेबिलिटी की प्रोविजंस, कुछ आपके एग्जम्पशंस के प्रोविजंस हैं जो आपकी इनकम को एग्जेप्ट करते हैं, कुछ इस तरह के एरियाज हैं जो मशीनरी प्रोविजंस हैं, कुछ प्रोसीजरल हैं। ठीक है, तो अब इन सब को सब जब फील्ड में आते हैं तो स्केड्यूल को अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि स्केड्यूल्स के अंदर तीन चीज़ें पैराडाइम, तीन पैराडाइम्स हैं। एक तो आपकी जो इनकम है उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, दूसरा है कि कौन सी इनकम कौन सी चीज़ एग्जम्प्टेड है, ठीक है, और तीसरा है कि कितना उस पे रेट लगेगा और कितने टाइम पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपके स्केड्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सिर्फ सेक्शंस नहीं पढ़ने, सिर्फ लिटिगेशन का पार्ट नहीं देखना, और रेट के जो पार्ट्स हैं वो स्केड्यूल्स के अंदर है। तो अगर मैं वन लाइनर कह दूं इनकम टैक्स को कि फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट एंड कंप्यूट योर इनकम, ठीक है, योर इनकम व्हाट यू अर्न, okay. Second thing is that how do you calculate, and how do you assess, and how do you defend yourself once your that order has been issued, and that you are aggrieved, फिर आप एक litigation में जाएंगे, एक पूरा लीगल टाया है आपका। ठीक हो गया, दैट्स क्लियर। ओके, अब ये इनकम टैक्स हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं, नाउ कमिंग बैक टू योर सेल टैक्स एक्ट। लेट मी शेयर विद यू सेल टैक्स एक्ट। ओके, दिस इज योर सेल टैक्स एक्ट। What the preamble of this law says, लॉ से प्रॉब्लम ये है कि लॉ आपको पढ़ना पड़ता है। Where it is expedient to consolidate and amend the law relating to levy of tax on sale, ये समझना बहुत जरूरी है। इंपोर्टेशन आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टेशन आप एक्सपोर्ट करते हैं, एंड प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस करते हैं, और मैन्युफैक्चर करते हैं, और कंजम्पशन करते हैं किसकी, ऑफ गुड्स की, सर्विसेज की नहीं। ठीक है, तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सेल टैक्स एक्ट। इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट and amend the laws relating to levy of the tax on
importation, exportation, and your production, manufacture, and consumption. क्लियर? सो अब हम देखेंगे ये चार्ज किस तरह होगा। फिर मैं पीछे एक चीज पढ़ लेता हूं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट अमिड द लॉ रिलेटिंग टू लेवी ऑफ अ टैक्स ऑन सेल। फिर ये चीज रिपीट हो रही है। तो दिस इज अ preamble, दैट preamble ऑफ द लॉ कंट्रोल्स योर कंप्लीट लेजिस्लेटिव पीस। Now the scope and payment of the tax. The section 3 of the Cell Tax Act we call is a charging provision. We call it a charging provision. Subject to the provision of this Act, there shall be charged, levied, and paid a tax known as sale tax at the rate of the 18% of the value of। किस पे लगेगा? वैल्यू ऑफ कह रहा है कि टैक्सेबल सप्लाईज मेड, जब आप टैक्सेबल सप्लाईज करेंगे बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय हिम। कोई भी सप्लाई करते हैं वो टैक्सेबल है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं तो उसके ऊपर आप 18% जो है टैक्स चार्ज करेंगे। अब यहां पे जो मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग टैक्स सेल टैक्स है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल थ्रू टू मेजर टर्म्स, दैट इज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। वो मैं आगे डिस्कस करता हूं। सेल टैक्स एनुअल फाइलिंग होता, दैट इज फाइल मंथली। Goods imported into Pakistan, irrespective of their final destination in the territories of Pakistan, पहले कहा था कि टैक्सेबल सप्लाईज पे लगेगा। सेकंड इज गुड्स इंपोर्ट इन पाकिस्तान, जो गुड्स आप पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये सेल टैक्स लगता है। अब कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 और एनी नोटिफिकेशन इशूड देयर अंडर where taxable supplies are made to person who has not obtained a registration number or he is not an active taxpayer, there shall be charged, levied, paid further tax। अब ये फर्दर टैक्स का नया कॉन्सेप्ट आपके सामने भी आ गया। कहता है कि जब आप किसी बंदे को टैक्सेबल सप्लाई करते हैं और वो जो टैक्सेबल सप्लाई उसको आपने कर दिया है, अब आपने देखना है, मैंने आपको कहा ना टैक्स बिहेवियर है, टैक्स खुद नहीं लगता, उसको जब रिएक्शन आता है कोई तो फिर वो अट्रैक्ट करेगा। नाउ इफ द पर्सन इज रजिस्टर्ड तो सिंपली यू विल चार्ज 18%। इफ द पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड then along with that 18% you will charge further tax, that 3% further as a punishment। So the amount that you will be collecting from the person to whom you sell making a taxable supplies, अब अमाउंट हो जाएगी 21%। अब सवाल ये बाद में ये आएगा, ये 3% कहां जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ये आप क्लेम भी नहीं कर सकते। 18% का जो इनपुट आउट की मैकेनिज्म उसमें आप प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। नहीं, सेल वॉल्यूम पे नहीं करता, एटम पे करेगा, ठीक है।
क्लियर? सेल वॉल्यूम और चीज है जिसको ऊपर टर्नओवर करना चाह रहे हैं आप, एम आई राइट? टैक्सेबल सप्लाईज में मतलब है कि जो सप्लाई आप कर रहे हैं ना, जो आइटम कर रहे हैं उस पे लगेगा। अच्छा, नाउ अ बिट क्लैरिटी एग्जिस्ट। सॉरी, अब इन्होंने 4% कर दिया। So the percent of the value in addition to the rate specified in subsection 1, 1B, 2, 4, 6 and section 4, provided that the federal government may by notification, yes powers हैं वो कोई भी चीज change कर सकते हैं। Okay. So on 1B of 3, on the goods specified in the 10th schedule, in lieu of the levying and collecting tax under subsection 1, the tax shall be levied and collected in the mode and manner specified therein. On the production, the capacity of plants, इसको छोड़ दें आप. That's this is how to check these items. These items are given your schedules. ठीक है, स्केड्यूल में दिए होते हैं। शाह साहिब, I don't know your name, whether I'm getting taking it right or wrong, but you can find these items given in schedules. ठीक है? Now here is a very important term, ये taxable supply क्या होती है? ये भी लॉ के अंदर दिया हो यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे देखेंगे, कहता है कि टैक्सेबल सप्लाईज मींस इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल। ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, आपने अभी क्वेश्चन पूछा है कि वो आइटम्स का कहाँ से पता चलेगा। ये कह रहा है कि मैंने आपको कहा ना कि स्केड्यूल में पता चलेगा। थर्ड स्केड्यूल शैल बी चार्ज टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल शैल बी चार्ज टू द टैक्स रेट एट द रेट ऑफ द 18%। अब वो जो आइटम्स हैं उस पर रेट दिया होता है। अब मैं सपोज करें अपने लेब के लिए मशीन्स मंगवाता हूं बाहर से, मैं क्या कर रहा हूं? इंपोर्ट कर रहा हूं। मैं अपने मदरसे के लिए, मैं अपने स्कूल के लिए बुक्स मंगवा रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं। मैं स्टोर चलाने के लिए बाहर से दवाई मंगवा रहा हूं। मैं अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए बाहर से मशीनें मंगवा रहा हूं। तो इस पे सेल टैक्स लगेगा या इनकम टैक्स लगेगा? मुझे कमेंट में आंसर दें। Again, I want to repeat, I import plants and machinery from England and from anywhere for any kind of purpose, for any purpose. And I do import books for my university and library. And I do import pharmaceutical item for my stores, for my company, medicine company, and I do import. You can say any kind of thing. So on that activity and that items, इनकम टैक्स लगे या सेल टैक्स लगेगा? बस इसका मुझे अंदर यहाँ पे दे दें आंसर, वेदर द टैक्स सेल टैक्स अप्लाई और द इनकम टैक्स अप्लाई। I don't know how many people are there, but thing is that sales tax shall apply. Duty is something else. Rashid, duty is something else. ओके, सेल टैक्स, हाँ, ड्यूटी समथिंग एल्स। ठीक है, वो जब हम उसमें जाएंगे ना उसी में, अभी तक तो मैंने सिर्फ सो फार आई हैव डिस्कस द सेल टैक्स। हाँ, ओके ओके ओके।
नाउ अब हम सेल टैक्स विल बी अप्लाइड, ओके राइट। अब नाउ द अब देखें ना, द थिंग वी आर digital marketer Robert, I don't know, I'm not getting your name properly, but thing is that apparently sale tax is quite similar as compared to the income tax. But interestingly, sale tax is very dangerous law. Very dangerous law. How it's a dangerous law? One thing is that it is filed and calculated monthly basis. Mechanism of input and output involved means at some point you are giving tax, at some point you are collecting tax, and making both your input and output in view, declaring your annual, your monthly returns. अब हमने ये देखना है कि जब आप फाइल करते हैं आपकी रिटर्न्स, उसमें कौन कौन सी चीजें देखते हैं। मेरे पास तो सेल भी है, मेरे पास परचेज भी है, मेरे पास डोमेस्टिक परचेज है, मेरे पास डोमेस्टिक सेल भी है, मेरे पास इंटरनेशनल परचेज भी है और इंटरनेशनल नेशनल परचेज भी है। तो इसको समझने के लिए हमें एनेक्जर समझना पड़ते हैं कि कौन से एनेक्जर में कौन सी चीज हमारी फाइल होगी। आपने जब मंथली सेल टैक्स फाइल करना है तो उसमें चार चीजें आपने अपने जहन में रखनी। यू हैव टू कीप फोर थिंग्स इन व्यू। वन इज दैट द थिंग एटम, जैसे रशीद ने पूछा कि जो आपका एटम है, वो एटम जो आपके पास है जिस पे टैक्स लग रहा है, आपको पता होना चाहिए कि इस एटम के ऊपर जो टैक्स लगना है वो पहली बात इससे निकलना है आपके, वेदर दैट इज एग्जम्प्टेड और दैट इज चार्जेबल। ओके, अब इस ब्रेकेट से आप आगे सामने कि एग्जम्प्टेड है तो फिर तो बात खत्म हो गई, पर आपने फाइल फिर भी करना है। अगर एग्जम्प्टेड नहीं है, नाउ द सेल टैक्स अप्लाइज हियर। सो यहां पे आपने फिर देखना है कि कितना लगेगा इस पे। रेट्स आर गिवन इन स्केड्यूल, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने ये देखना है थर्ड स्टेज पे कि ये जो आपकी परचेज है, जिस बंदे से आपने परचेज की है, आपने तो उसको टैक्स दे दिया, क्योंकि जब आपने उसने आपको चीज दी और उसने आपसे पेमेंट ली तो वो आपसे टैक्स ले लेगा। 18% उसने कलेक्शन करनी है। अब आपने उसकी उस चीज को जब खुद फिर सेल करेंगे, जब व्हेन यू आर सेलिंग दैट आइटम, अब वहां से आपने परचेज की, यहां से आगे सेल करेंगे। आज इस बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल, ये एक्टिविटीज पूरी चेन है सप्लाई की। सप्लाई चेन क्या है? अब पीपल आर हियर फ्रॉम द बिजनेस field, they can understand what is supply chain. Suppose I run a glass company, glass production company in Karachi, Korangi. Clear? I want to sell that glass as a brand and a product across the country. Clear? Now I have a different people in different cities. The people come to me, they take things in bulk form. They are wholesalers. Now it depends upon wholesaler how do they sell that bulk at their own part, whether they give to their distributors, या मैं फिर खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, हैदराबाद में बैठा हुआ, इस्लामाबाद में बैठा हुआ बंदा, उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहता हूं कि ये चीजें आप लेके जाओ वहां पर भेजो।
अब डिस्ट्रीब्यूटर अपने रख के वहां पे उसकी मर्जी होलसेलर को देता है या आपके रिटेलर को देता है। अब रिटेलर को जब जाता है तो रिटेलर के बाद एंड कंज्यूमर लेगा। सो ये पूरी चेन बन गई। आपका जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, अच्छा, प्रोड्यूसर से पहले भी कुछ एक्टिविटीज हैं जो सेल टैक्स में कवर होती हैं। सपोज मैं ग्लास तो बना रहा हूं, मगर ग्लास बनाने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने उस ग्लास को बनाने के लिए मैंने कोई मटेरियल परचेज करना है। अब वो मटेरियल जब मैंने परचेज किया उसके ऊपर भी टैक्स लगा। अब ये जब बन के तैयार हो जाएगा, जब मैंने आगे ये बेच देना है, तो उस जो पेमेंट पीछे की है मैंने, वो मैंने आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट माइनस आउटपुट से हिसाब से करना। फिर जो मॉडिफिकेशन मैंने किया, क्योंकि जो सेल टैक्स का मैकेनिज्म है दैट ऑपरेट्स अंडर द मॉडल फार्मूला ऑफ द वेट वैल्यू एडिशन टैक्स। सो ये टैक्स का, सेल टैक्स का मैकेनिज्म जो था, अंडरस्टैंडिंग बेसिक मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। इसी तरह इसकी जब इसकी भी असेसमेंट होती है सेक्शन 11E के अंदर, और उसके बाद फिर इसका ऑडिट भी होता है। इसके बाद इसका आपका जो है इसकी अपील भी होती है वन, इसकी अपील 40B 46, और फिर ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल के बाद इसका टैक्स रेफरेंस भी होता है, ठीक है। और इसके बाद हम फिर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया है, वो मैकेनिज्म यही है। मगर उसमें ज़्यादातर विद होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज मोस्टली विद होल्डिंग पैराडाइम पे चलती है। Up to that, if there is any question due to shortage of the time, we fail to make you visit the portal. अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं, एक सेकंड। अच्छा, ये जब हम प्रैक्टिकली फाइल करते हैं चीज़ों को, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारा आईआरएस का पोर्टल है, ठीक है, यहाँ से हमारी टैक्स फाइलिंग होती है। ये इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ये कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E क्या है, वेरिफिकेशन किस तरह होगी, पेमेंट किस तरह होगी, टैक्स आसान क्या चीज़ है, एफबीआर मालूमात क्या है, एसओपी व्हाट्स न्यू, हेल्प लाइन, और फिर हम फाइलिंग किस तरह करते हैं, और ये चीज़ें फिर रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी। यहाँ पे अगर हमारा बना हुआ है और पासवर्ड नहीं है, तो हम कैसे फिर ये पासवर्ड रिकवर करेंगे। इसी तरह फिर इसके नीचे पेज है, लेट मी शेयर दैट विद यू, ठीक है। ऑनलाइन आप क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं, ये चीज़, ये देखो, अगर आप मालूम करना चाहते हैं एजेके के अंदर हैं, तो एजेके के अंदर के कितने लोग हैं, उनका टैक्स पेयर लिस्ट में नाम है या नहीं है, ये सारी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल टैक्स वाले अलग है, ठीक है। और टैक्स पेयर की प्रोफाइल अगर आप करना चाहते हैं मालूम, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा, पैरामीटर्स पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप सीएनएसई के थ्रू करना चाहते हैं या इंडियन के थ्रू करना चाहते हैं। फिर वो जो सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद देन यू हैव टू इंसर्ट हेयर दैट अमाउंट। कैन वी आल्सो डिडक्ट सेल टैक्स पेड ऑन एक्सपेंसेस? यस, डेफिनेटली वो माइनस करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 7 उन चीज़ों को तो डील करता है, ठीक है रशीद। मैं आपको छोटी मिसाल दूँ, आपकी शॉप है, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी, आई होप सो। द क्वेश्चन इज कैन वी आल्सो डिडक्ट सेल टैक्स पेड ऑन एक्सपेंसेस? तो मैं आपकी सेक्शन ओपन कर देता हूँ।
Okay. Just give me 1 minute. The question of Mr. Rashid is that now the expenses and how to determine the tax liability in said tax. Subject to the provision of the Section 8 and Section 8B for the purpose of determining his tax liability in respect of a taxable supplies made during tax period. Tax period means during that month. A registered person shall, subject to provision of Section 73, be entitled to deduct input tax, be entitled to deduct input tax paid or payable during the tax period for the purpose of taxable supplies made or to be made by him from the output tax, excluding the amount of further tax under subsection 1, section 3 that is due from him in respect of the tax period, and to make such other adjustment as are specified in section 9. And what is in section 9? It's very important. लॉ के अंदर क्या होता है कि लॉ के अंदर कोई भी बात आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ए लर्निंग कि एक एक चीज़ मैं आपको किताब से बता रहा हूँ कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है. टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड section. Notwithstanding anything containing in this act, registered person shall not be entitled to reclaim for deduct input tax paid. Goods services used are ये आपकी जिस तरह बिजनेस में एक्सपेंसेस अलो होते हैं, इस तरह सेल टैक्स के अंदर ये चीजें वो कौन सी चीजें जो आप नहीं कर सकते, बाकी जो है आप कर सकते हैं. Now the section 8B is very important, adjustable input tax. So let me recap this whole discussion into just 1 to 5 minutes. Now, so far we have discussed tax laws in Pakistan. What are the tax laws in Pakistan and how do these laws applied for the assessment, for the collection, for the recovery and levy and charge of the tax, and what are the provision of the respective laws that we use for the litigation in tax. Now we have the three types, as I told you. One is the tax compliance, when we file tax returns and prove government and make plus minus and as discuss the total income and taxable income. That you can say the skeleton of the your complete fiscal laws. Okay, what I earn now, this is my total income. When I turn it to the taxable income, it means I deduct the deductible allowances. Once I filed these all my heads of income under different source of income I earned as annual, and then add to the extent of the sale tax from my sales, from my purchase, from different annexures. So due to lack of the time, we failed to bring make you understand different annexures. So I also discussed the how to file tax returns and what is the application of section double one four and 116, and application of section 120, application of section 121 and 122, 177, 214C and 24D, and from the withholding paradigm from section 149, 140 up to the 165, and also 236C and onward. And when we also discuss with the certain where the rates are defined for the chargeability of the income tax, that's defined in different schedules. And also we discussed here sale tax and chargeability of the sale tax, how the sale tax is charged, and on what areas and what items and what activity the sale tax is charged. As Rashid asked that case, sale tax is charged on items purely, that's charged on items. And secondly, he again asked question how to determine the rate of these items, that's given in the schedule. And lastly, how to determine that. When you determine the tax liability in the sale tax, you keep three sections in view, four sections. Section 7, Section 8, Section 9, and Section 73 of your sale tax act.
Similarly, parameter section of income tax ordinance, section 21, 22, and an on. Clear? So we failed to discuss in detail federal excise duty, even these laws. So due to lack of the time, if there is any question, you can ask me or you can drop the question in your comment section. We will be discussing and will be with you. And I'm also available anytime, anywhere. You can ask me questions. We are available as a LinkedIn. Gmail is given, and anytime, any question you can ask me. Thank you so much.